કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરી. આ બેઠકમાં જળ સંરક્ષણ, નદી જોડાણ, આંતરરાજ્ય જળ વિવાદ અને પાણીના અસરકારક સંચાલન જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી. સી.આર. પાટીલે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો મળી અને દેશની જળ સંપત્તિને સુરક્ષિત કરવા માટે અને દરેક સુધી પાણી પહોંચાડવા માટે ઝડપથી કાર્યરત છે. આ મીટિંગ પછી શું થયું, સી.આર. પાટીલે કાર્યક્રમ દરમિયાન શું કહ્યું તે સાંભળો. भद्रा डैम में भी 15% से भी ज़्यादा वो सिल्टिंग हो गया है. हमारे मंत्रालय में इसके लिए एक योजना बनी है. हमारे सेक्रेटरी वी.एल. कांता राव जी भी आज यहाँ पर है. हमने तीनों मुख्यमंत्री को भी कहा है कि डी सिल्टिंग के लिए हम लोग योजना बनाकर आपके सामने रखेंगे. काम तो तीनों मुख्यमंत्री को करना है, मगर जो निर्णय करना है, उनको जो टेक्निकल सहयोग करना है वो हम जल्दी से करेंगे. और तुंगभद्रा की पानी की कैपेसिटी करीब 25 से 30% और ज़्यादा बढ़ जाएगी. मैं इसके लिए भी तीनों मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. उनका पहला उदाहरण है, क्या 33 गेट लग गए, ये भी तीनों मुख्यमंत्रियों ने सहयोग किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आर्थिक सहयोग भी किया. इसी के कारण ये हो पाया है. तुंगभद्रा का डिसिल्टिंग भी ये तीनों मुख्यमंत्री के सहयोग के साथ बहुत जल्दी पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ.